गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिटी रेडियो सेक्टर की ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने रिसेंटली रिवाइज पॉलिसी गाइडलाइंस जो हैं इशू की हैं, ताकि कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस जो हैं उनको सेटअप किया जा सके। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट थर्ड टीयर है ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में। लो पावर्ड रेडियो स्टेशंस होते हैं जो कि लोकल कम्युनिटीज़ ही चलाती हैं, सेटअप करती हैं और वो ऑपरेट करती हैं इसको। 2002 में एक पॉलिसी जो है लाइसेंस ग्रांट करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव की गई थी, और 2006 में पॉलिसी गाइडलाइंस इशू की गई कि कैसे जो हैं ये कम्युनिटी बेस्ड जो है ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस चला सकती हैं। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? जो भी लोकल इश्यूज़ हैं जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, उसको लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में लोगों तक पहुंचाया जाता है इसके थ्रू, ताकि पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इंश्योर की जा सके। और इसमें लोकल फोक म्यूज़िक, कल्चरल हेरिटेज भी जो है वो ब्रॉडकास्ट की जाती है ताकि उसको प्रिजर्व किया जा सके। तो सबसे पहला कम्युनिटी रेडियो इंडिया में 2004 में अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में जो है वो सेटअप किया गया। और इस बार जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सिविल सोसाइटी, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने एम्बिट में लाया जाएगा इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए, और ईज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन इंश्योर की जाएगी। तो लगभग 481 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है इंडिया में अभी ऑपरेट करते हैं। टारगेट ये है कि 1000 तक पहुंचाया जाए इस नंबर को। इन रिवाइज्ड पॉलिसी गाइडलाइंस में कहा जा रहा है कि एडवर्टाइजिंग रेट को जो है इंक्रीज़ किया गया है। एडवाइजरी और कंटेंट कमेटी जो है वो लोकल कम्युनिटी को के लेवल पर बनाई जा रही है, जिसमें 50% वेमेन होंगी। और एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो 6 से ज़्यादा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस जो है नहीं बना सकेंगी। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको याद होगा कि थंथाई पेरियार सेंचुरी में तमिलनाडु में जो है फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स के ऊपर कुछ कंसर्न्स जो हैं वो सामने आए हैं। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के हिसाब से तो उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि रेलिवेंट लॉज की वायलेशन हो रही है। 6 ट्राइबल फॉरेस्ट विलेजेस जो हैं उनको बेसिक राइट्स और फैसिलिटीज़ उनकी डिनाई की जा रही है और उनको एक्सक्लूड किया गया है इस सेंचुरी से। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्या कहते हैं? तो राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के लिए ये एक्ट बनाया गया था, जिसमें कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस को अंडू करना है, लैंड टर्न्योर इंश्योर करना है, लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी जो है वो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स की इंश्योर करनी है, कंजर्वेशन रजीम ऑफ फॉरेस्ट को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि राइट टू ओनरशिप ऑफ लैंड जो फार्म किया जा रहा है फॉरेस्ट ड्वेलर्स द्वारा, उसको इंश्योर किया जाता है। मैक्सिमम 4 हेक्टेयर्स पर फैमिली, और ओनरशिप जो है वो एक्चुअली उस कंसर्न फैमिली द्वारा ही कल्टीवेट की जानी चाहिए। ठीक है। तभी ओनरशिप जो है इंश्योर की जाएगी। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वहाँ पर वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में याद रखो टिम्बर नहीं आता है। ठीक है। तो राइट टू प्रोटेक्ट और मैनेज द फॉरेस्ट भी जो है उनको दिया जाता है इस एक्ट के अंदर। और कौन क्लेम कर सकता है ये राइट? मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और कम से कम उनकी 3 जनरेशन जो है 2005 से पहले पहले उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट लैंड पर रिजाइड करती होनी चाहिए और उसको कल्टीवेट करती होनी चाहिए। ठीक है। कैसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं राइट्स? सबसे पहले ग्राम सभा रिकमेंडेशन देती है कि कौन से लोग जो हैं कल्टीवेट कर रहे हैं कम से कम 3 जनरेशन से। उसको फिर जो है स्क्रीनिंग कमेटी तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है गो थ्रू करती है, और एंड में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है वो फाइनल डिसीजन लेती है। ठीक है। तो थंथाई पेरियार सेंचुरी में क्या हो रहा है? कैटल ग्रेजर्स के जो है राइट्स जो हैं ग्रेजिंग के इस सेंचुरी में वो बैन किए गए हैं। बार्गर कैटल जो है उसको रोका जा रहा है ट्रेडिशनल ग्रेजिंग ग्राउंड से। मार्च 2022 में मद्रास हाई कोर्ट ने भी रिवाइज़ की अपना ओल्ड ऑर्डर, जिसमें कि टोटल बैन लगाया गया ग्रेजिंग के ऊपर फॉरेस्ट में तमिलनाडु में। तमिलनाडु याद रखो अकेली ऐसी एक स्टेट है कंट्री में जहाँ पर ऐसा इस तरह का बैन है ग्रेजिंग के ऊपर। ठीक है। और इस बैन को नेशनल पार्क, सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स के ऊपर जो है वो एक्सटेंड किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की पहली कंपनी बनी है जिसने 20 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन को सरपास कर लिया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है?
मार्केट वैल्यू एक कंपनी की, जिसको आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी मल्टीप्लाइड बाय करंट प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स के साथ कैलकुलेट करके जो है वो निकाला जाता है। तो बेसिकली ये मार्केट परसेप्शन दिखाती है कंपनी की वर्थ की। तो 3 तरह की कंपनीज़ होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। तो लार्ज कैप कंपनीज़ जो हैं 20,000 करोड़ से ज़्यादा की उनकी वर्थ होती है। मिड कैप कंपनीज़ की 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होती है, और स्मॉल कैप 5,000 करोड़ से कम की होती हैं कंपनीज़। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है, ट्रू वैल्यू ऑफ कंपनीज़ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को दिखाती है, और इन्वेस्टर्स जो है वो उसी के बेसिस पर उस कंपनी के स्टॉक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? तो जनरली मार्केट कैपिटलाइजेशन में तो सारे तरह के शेयर्स आते हैं ना, चाहे जो पब्लिकली ट्रेड हो रहे हो, या फिर जो शेयर्स प्रमोटर्स, गवर्नमेंट या अदर प्राइवेट पार्टीज़ के पास हो। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जिसमें जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज़ हैं, पब्लिकली ट्रेडेड जो शेयर्स हैं, उनका मार्केट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके जो है वो निकलती है, उसको हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने रिसेंटली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 को एड्रेस किया है एज गेस्ट ऑफ ऑनर यूएई में। तो ये एक एनुअल ग्लोबल गैदरिंग है जिसमें वर्ल्ड लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स जो हैं वो आते हैं और डिस्कस करते हैं ग्लोबल इश्यूज़ को। 2013 में इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई की लीडरशिप में इस्टेब्लिश किया गया था। एनुअली हेल्ड की जाती है ये दुबई में, और मिशन ये रहेगा कि रहता है इसका कि फ्यूचर गवर्नमेंट्स को जो है शेप किया जाए, बेटर फ्यूचर दिया जाए ह्यूमैनिटी को। इस साल का थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ब्यूबॉनिक प्लेग। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस स्टेट ऑफ ओरिगन के जो ऑफिशियल्स हैं वो एक रेयर ह्यूमन केस ऑफ ब्यूबॉनिक प्लेग से जूझ रहे हैं। और ब्यूबॉनिक प्लेग क्या होता है? एक इन्फेक्शियस डिसीज़ जो कि यर्सीनिया पेस्टिस, एक जूनोटिक बैक्टीरियम द्वारा जो है वो फैलती है रादर स्मॉल मैमल्स और फ्लीज में। तो ये ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को अफेक्ट करती है, और इसमें स्वॉलन लिम्फ नोड्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं, जिसने यूरोप में मिडल एजेस में कई लाखों लोगों को मार दिया था। 2 तरह के मेन प्लेग होते हैं, एक सेप्टिसेमिक प्लेग जिसमें कि इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है, एक न्यूमोनिक प्लेग जिसमें कि लंग्स अफेक्ट होते हैं। तो ये बहुत सिवियर डिसीज़ हो सकती है लोगों में, जिसमें कि केस फर्टिलिटी रेशियो जो है वो 30% से 60% तक भी पहुंच सकता है। तो हाई फीवर, चिल्स आते हैं, और एब्डोमेन, आर्म्स और लेग्स में पेन होती है, हेडेक होती है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लीज, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड टिश्यूज़। इन्हेलेशन से भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। और इंक्यूबेशन पीरियड इसका जनरली 2 से 8 दिन का होता है। एंटीबायोटिक से इसको जो है वो ट्रीट किया जा सकता है, खासकर से प्रोफ्लेक्सिन, लिवोफ्लेक्सिन, मॉक्सीफ्लोफेक्सिन, गेंटामिसिन जैसी एंटीबायोटिक से, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ई जागृति पोर्टल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी ने रिसेंटली कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाएगा ई जागृति पोर्टल में, जिससे कि नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस जो कंज्यूमर कोर्ट्स में है उसको रिड्यूस किया जा सकेगा। तो ई जागृति पोर्टल क्या है? एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का, जो कि कंज्यूमर कमीशंस को डेडिकेटेड एक पोर्टल है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सॉफ्टवेयर जो है इसमें दिया जाता है, सिंपल, फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें कंज्यूमर ग्रीवेंस प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है। तो इसमें केस फाइलिंग करना, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना, केस मॉनिटरिंग करना, सीमलेस डिस्पोजल ऑफ केसेस करना, स्मार्ट सर्च फैसिलिटी, वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ जजमेंट्स, केस हिस्ट्री, बाकी डिटेल्स देना, ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें जो है ये पोर्टल वर्चुअल कोर्ट फैसिलिटी भी देती है, ताकि टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस, मल्टीपल हियरिंग्स, फिजिकल कोर्ट अपीयरेंसेस, इन सब को भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है। तो ये एनसीडीआरसी का ही एक पार्ट है, जो कि एक क्वाजी जुडिशियल कमीशन है, जिसको 1988 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेटअप किया गया, और इसको सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हेड करते हैं। और इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा के वैल्यू के केसेस पर होती है, और इनके अगेंस्ट जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये टॉपिक अगेन आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेक्रेटरी जो है लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के, उन्होंने नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है थ्रू आउट असम जो है वो लॉन्च किया है यूएल पिन के साथ।
तो नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का ही प्रोजेक्ट है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स अक्रॉस द कंट्री वन नेशन वन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव के अंडर जो है वो लाए जा रहे हैं। एनआईसी पुणे ने इसको बनाया है। इसमें जितने भी सब रजिस्ट्रार्स हैं, सिटीजन्स हैं, एपेक्स यूज़र्स हैं रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स के, उनको जो है वो इंटीग्रेट किया जा रहा है वो, ताकि इसको यूज़ कर सके। इसमें स्टेट स्पेसिफिक इंस्टेंसेस भी जो है बनाए जाते हैं। प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। सर्कल रेट ऑफ लैंड इसमें जो है यूज़र देख सकता है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन देख सकते हैं, टाइप ऑफ लैंड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें सेल के लिए जो है जितनी भी हैं उनको भी, उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी जो है वो यहाँ पर मेंशन की जाती है, ताकि इंफॉर्मेशन जनरेट ली जा सके। अब यूएल पिन क्या है? यूएल पिन एक बेसिकली यूनिक ब्लॉकचेन आईडी है, जो कि लैंड पार्सल को लगाया, लैंड पार्सल के साथ एसोसिएट किया जाता है, और 14 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये, और कह सकते हो आप इसको कि आधार फॉर लैंड है ये। और इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ऑफ द लैंड पार्सल के हिसाब से जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, और ये जियो रेफरेंस्ड कैडेस्ट्रल मैप्स के बेसिस पर काम करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट और आपके गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए जो है वो अभी तक उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया स्टेट्स का। तो स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग जो है वर्ल्ड क्लास हाइजीन और सैनिटेशन देने का का एक इनिशिएटिव है होटल्स, रिजॉर्ट्स और होम स्टेज में। ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉल्यूशन वाटर बॉडीज़ का जो है वो कम किया जा सके, इन्वायरमेंट को क्लीन किया जा रखा जा सके। टारगेट ग्रुप इसमें होटल्स, लॉजेस, होम स्टेज, धर्मशाला, कैंप जिनके पास पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं, वो इसके टारगेट ग्रुप हैं। थ्री टीयर्ड कमेटी सिस्टम इसमें बनाने की बात की जा रही है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लेवल पर, फिर जो है डिस्ट्रिक्ट कमेटी लेवल पर जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, फिर स्टेट लेवल पर जिसको चीफ सेक्रेटरी जो है ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो इनाग्रेट की है या लॉन्च की है, ताकि फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है बेनिफिशरीज़ को दी जा सके। अब याद रखो ये मुफ्तखोरी वाली स्कीम नहीं है, कोई फ्री भी नहीं है। इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो देगी, लेकिन 75,000 करोड़ रुपए कैसे किस लिए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि रूफ टॉप सोलर जो है वो लगाया जा सके। तो होगा क्या कि जो बेनिफिशरीज होंगे उनके रूफ टॉप सोलर लगाया जाएगा, 300 यूनिट तक उनको बिजली फ्री दी जाएगी, लेकिन उससे ऊपर जो जनरेट होगी वो ग्रिड में जोड़ी जाएगी, ठीक है। और उसको जो है रिन्यूएबल टारगेट जो है हमारा उसका एनर्जी जनरेट करने का, उसमें कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो लोगों पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा बिजली का, और सरकारों के ऊपर भी जो है 300 यूनिट जो फ्री बिजली फ्रीबीज देते हैं स्टेट्स गवर्नमेंट्स, उनको उनके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा ये, कि उनको अपनी जो है कोल पावर्ड एनर्जी या फिर कोल से जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी जो पावर डिपार्टमेंट देता है वो नहीं देनी पड़ेगी, है ना। तो जो इसमें सब्सिडीज़ हैं वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में जाएंगी, और हाईली कंसेशनल बैंक लोन्स भी जो हैं दिए जाएंगे रूफ टॉप सोलर लगाने के लिए इन द ज्यूरिसडिक्शन, अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत को भी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is community radio stations. This topic is important for your governance section. So to ensure growth of community radio sector, INB Ministry has launched the revised policy guidelines for setting up community radio stations in the country on the occasion of World Radio Day. So, what are community radio stations? So, these are an important third tier in radio broadcasting. They are low powered radio stations which are meant to be set up and operated by local communities. In 2002, Government of India approved the policy for grant of license for these community radio stations. These policy guidelines were amended in 2006, and which permitted community-based organizations like ICAR, Krishi Vigyan Kendra, registered societies, public charitable trusts to own and operate CRS. So, what is the significance of community radio? So, they air local voices on issues concerning health, nutrition, education, agriculture, and they broadcast it in local languages and dialects. They also strengthen people's participation in development programs. Apart from that, they are a repository of local folk music and cultural heritage.
So the first community radio station in India was started in 2004 at Anna University, Chennai, and the government has decided that they would broaden the policy to bring not-profit organizations like civil society and voluntary organization under the ambit also, so as to enable ease of registration also. And the sector has grown substantially. The number of CRS have increased from 140 in 2014 to 481 in 2023. The goal or the target has been set at 1000 CRS in India now. So the revised policy guidelines say that there should be an increase in advertising rate. The licensee will set up an advisory and content committee also, which will comprise members of local community with 50% reservation for women, representation for women. And eligible organizations operating in multiple districts would only be allowed to set up a maximum of 6 community radio stations in different districts of operation. Okay, so the next topic is rights of forest dwellers. This topic is important for your environment section and also your social issues. So this month we know that notification for Thanthai Periyar Sanctuary in Erode district of Tamil Nadu was issued, but it has raised concerns among the forest dwellers, and this has expressed fear that it may lead to violation of Forest Rights Act of these forest dwellers. So these forest dwellers have accused the district and state administration of violating their relevant laws. 6 tribal forest villages have been denied the basic rights and facilities because they are not revenue villages and they have been excluded from the sanctuary. So what are the Forest Rights Act? What is the Forest Right Act? So basically it recognizes the rights of forest dwelling communities and other traditional forest dwellers in forest resources to undo the historical injustice occurred to these communities, and to ensure land tenure, livelihood and food security for them, and to strengthen the conservation regime of the forests by including the responsibilities and authority of forest dwellers for sustainable use, conservation of biodiversity, and maintenance of ecological balance. So, what rights do they get? So they get right to ownership to land farmed by them to a maximum of 4 hectares per family, and ownership is only given for that land which is actually being cultivated by the concerned family. Okay, they can extract minor forest produce from them. Remember that it does not include timber. So act also gives these communities the right to protect and manage their forest. So members of this community or of scheduled tribe, uh, they who are primarily residing in these areas are given the rights, and they should have been cultivating these lands for at least 3 generations up to 2005 December. Okay, so how these rights are recognized? So first of all, Gram Sabha makes the recommendation. Then the screening committees at taluka and district levels uh, uh, give their recommendation, and at the end district level committees make that final decision. So what are these rights which have been violated at Thanthai Periyar Sanctuary? So as per the new notification, cattle grazers can no longer graze in this sanctuary. Bargur cattle, which is a traditional breed native to this Bargur forest hills, have now been prevented from accessing their traditional grazing grounds. In March 2022, Madras High Court also revised an older order imposing a total ban on cattle grazing in all forests of Tamil Nadu and restricted this ban to national parks, uh, sanctuaries and tiger reserves. So remember that Tamil Nadu is the only state in the country where there is such a ban. So the next topic is market capitalization. This topic is important for your economy section. So Reliance Industries Limited has become the first Indian company to surpass 20 lakh crore rupees market capitalization. So market cap is basically the market value of a company. It is calculated by multiplying the number of outstanding shares of a company by the current price of its shares. It represents the market's perception of a company's worth. So there are three types or three uh, they are can be classified on the basis of large, mid and small cap companies. Large cap companies have a market cap of above 20,000 crore rupees. Mid cap companies have a market cap range of 5,000 to 20,000 crore rupees, and small cap companies are those of less than 5,000 crore market cap. So
Market cap allows potential investors to understand the true value of companies, and it also helps the investors to predict the future performance of the stock of that company. Then what is free float market capitalization? We know that market capitalization involves all the shares, including the ones publicly traded as well as those held by promoters, government or private parties. But in free float market capitalization, we only consider shares which are being traded at the public level. Okay. So the next topic is World Government Summit 2023. I'm sorry, 2024. This topic is important for your international relations. So Indian Prime Minister has attended the World Government Summit as guest of honor in UAE. It's an annual global gathering of world leaders, policymakers, experts to discuss and address pressing global issues. It was established in 2013 under the leadership of Prime Minister of UAE. It is annually held in Dubai, and it has a mission of shaping future governments and creating a better future for humanity. Its theme this year was shaping future governments. So the next topic is bubonic plague. This topic is important for your environment section. So officials in the US state of Oregon have recently said that they are dealing with the rare human case of bubonic plague, which was likely transmitted by a pet cat. So plague is an infectious disease caused by a bacterium called Yersinia pestis, which is a zoonotic bacterium found in small mammals and their fleas. So pestis can affect humans and animals, and it is spread mainly by fleas. So bubonic plague is one type of plague, and it gets its name from swollen lymph nodes caused by this disease. So there are two other types of plague as well: septicemic plague and pneumonic plague. Septicemic means when the infection goes all through the body. Pneumonic plague is a disease in which lungs are affected. So plague can be a very severe disease in people, and with a case fatality ratio of 30% to 60% for the bubonic type. So it in the bubonic type, sudden high fever and chills are observed. Pain in the areas of abdomen, arms and legs is observed. Okay, so it gets transmitted by the bite of infected fleas, direct contact with infected tissues, and inhalation of infected respiratory droplets. The incubation period of bubonic plague is usually 2 to 8 days, and it can be treated and cured with antibiotics, okay, like ciprofloxacin, levofloxacin, etc. So the next topic is e-Jagriti portal. This topic is important for your governance section. So Consumer Affairs Secretary has recently asserted that integration of AI in the e-Jagriti portal will help reduce the number of pending cases in the consumer courts. So e-Jagriti is an initiative of Department of Consumer Affairs. It is a portal for consumer commissions, and it is a simple, fast, and cost-effective consumer dispute redressal software solution at all levels. It integrates consumer grievance platforms, several of them, including the NCDRC. So e-Jagriti platform has case filing, online fee payment, case monitoring modules for seamless disposal of cases. Also has voice to text conversion of judgments, case history, and other details using AI technology. Okay, it also offers virtual court facility. So what is NCDRC? It's a quasi judicial commission which was set up in 1988 under the Consumer Protection Act of 1986. It is headed by a sitting or retired judge of Supreme Court. It has its jurisdiction to entertain a complaint valued at more than 2 crore rupees, and the aggrieved person aggrieved person by the order of NCDRC can appeal against the order in Supreme Court of India within 30 days. So the next topic is National Generic Document Registration System. This topic is important for your governance section. So Secretary of Department of Land Resources has rolled out the National Generic Document Registration System throughout Assam, along with the launch of UL PIN. Okay, what is National Generic Document Registration System? It is a project initiated by Department of Land Resources for registration departments across the country under One Nation One Software initiative. It has been developed by National Informatics Center of Pune, and it is specifically designed for the use of sub-registrars, citizens, and apex users from registration departments, and it facilitates states to create state-specific instances also. So
It offers complete user interface for property and document registration. People can find out the circle rate for land, calculate property valuation, and they can also even look at the prohibited properties which are restricted for sale. Okay, so what is ULPN then? It's a unique blockchain ID. You can call it Aadhaar for land. It is basically meant for land parcel, and it is a 14-digit alphanumeric identification number for the land, which is based on the longitude and latitude of the land parcel. Okay, so the next topic is Swachhata Green Leaf Rating. This topic is important for your governance section. So Swachhata Green Leaf Rating system for the hospitality sector is yet to take off because the states are not responsive to it. Swachhata Green Leaf Rating system is developed for the hospitality sector to ensure world-class hygiene and sanitation in hotels, resorts, and homestays. The objective is to prevent pollution in water bodies and to keep the environment clean. The target groups are hotels, lodges, homestays, dharamshalas, and camps which have portable toilets. So this program would be implemented at three-tiered committee system level, which would have subdivisional magistrate for on-ground verification, district committee with district collector as the chair, and then a state level committee which would be headed by the chief secretary of the state. So the next topic is PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. This topic is important for your governance section. So PM Modi has launched this scheme to provide free electricity to the beneficiaries in India. So the scheme has been launched by central government to provide 300 units of free electricity per month to the beneficiaries by investing for 75,000 crore rupees. The aim is to light up to 1 crore households. Under the scheme, urban local bodies and panchayats will be incentivized to promote rooftop solar systems in their jurisdictions. The central government will guarantee no financial burden to the people by providing them significant subsidies directly to their bank accounts and offering them highly concessional bank loans. So consider it as the scheme in which rooftop solar would be installed at your home. 300 units electricity would be free, and more any of course the any above that production from the solar rooftop would go back to the grid, and you would be able to generate 300 units electricity free of cost. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.